Good morning. Today I am sharing a video on parasitology and homeopathy. How homeopathy helps to remove or minimize the parasitic infection. So first we see what is parasite. Parasitology is a branch of pathology that deals with parasites and their pathogenic effects. A study of parasite is parasitology, and parasitology is branch of pathology that deals with the parasites and their pathogenic इफेक्ट्स. चिकित्सा परजीवी विज्ञान उन कीटों का अध्ययन है या करता है जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं. पैरासाइट्स दो प्रकार के होते हैं, दो किंगडम के होते हैं, एनिमल ग्रुप एंड प्लांट ग्रुप. टुडे वी डिस्कस अबाउट पैरासाइट्स ऑफ एनिमल किंगडम. So parasites of animal kingdom divided into three main groups: protozoa, helminths, arthropods. So protozoa और protozoology, helminths और helminthology, arthropods और entomology. Parasite. What is parasite? A living organism which received nourishment and shelter from another organism where it lives is called parasite. एक जीवाणु, एक प्रोटोजोआ और एनी एनिमल हु रिसीव्स नरिशमेंट, अपना पोषण जिससे रिसीव करता है, और अपना आश्रय दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बनाता है, पैरासाइट या परजीवी कहलाता है या कहते हैं. नेक्स्ट टर्म इज पैरासिटिज्म. द रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द पैरासाइट एंड होस्ट इज कॉल्ड पैरासाइट. परजीवी एंड पोषक के बीच में जो संबंध है उसे पैरासिटिज्म कहते हैं. इक्टोपैरासाइट और इक्टोजोआ. बाह्य परजीवी. इक्टो मीन्स बाह्य. इट लिव्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट. ये पोषक के शरीर पर बाह्य रूप में रहते हैं, उसके बाहरी भाग में रहते हैं. जैसे हम सामान्यतया जनरली देखते हैं, हेड लाइस, लाइस जू डायग्राम. इन दिस डायग्राम, हेड लाइस, बॉडी लाइस, प्यूबिक लाइस. These ectoparasites lives on outer surface of the host and receives the nutrition. Endoparasite or entozoa. It lives inside the body of the host in tissue, body cavities, blood, digestive organ and other part. Endoparasite or entozoa who lives inside the body. इंडोपैरासाइट्स और इंटोजोआ पोषक या होस्ट के आंतरिक भागों में रहते हैं, जैसे उनके उत्तक, कैविटीज, ब्लड, डाइजेस्टिव ऑर्गन, यूरिनरी ऑर्गन और अदर पार्ट्स. ऑब्लिगेटरी पैरासाइट. These are microorganisms which can only live as parasite
and cannot live or grow outside the body of the host. Example, Neisseria gonorrhoeae. Facultative parasite. These are parasites which leads a parasitic life but may also live outside the body of the host. Staphylococci or streptococci. In this slide, section of a roundworm infested intestine. How a roundworm grows and multiply on number inside intestine. So, ectoparasite and endoparasite. Temporary parasite. It visited its host for a short period. Host, what is host? An organism which harbors the parasite. वो जीव, वो मनुष्य या जीवधारी जो परजीवी को पालता है, अपने ऊपर रखता है. Definitive host. The host which harbors the adult stage of a parasite. Example, in malaria, a female Anopheles mosquito is the definitive host. In filariasis, man is the definitive host. Intermediate host. The host in which the parasite passes its larval stage or asexual stage is called the intermediate host. Man is intermediate host of the malaria parasite. Pathogen. The animal parasite producing disease of varying severity is known as pathogen. Infestation. The condition in which macroparasite like a helminth or arthropod establishes upon the superficial surface of a host body, the condition is called as infestation. So this is intermediate host, pathogen, infestation. Vector. Arthropods which harbor parasites and act as important agent of transmission of parasite to man are called vectors. Vector means वाहक. वो आर्थ्रोपोड और एनिमल जो पैरासाइट को एक शरीर से दूसरे शरीर या एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, वेक्टर कहलाता है. So these are the some terminology related with parasitology or used in a study of parasite, like what is parasite, ectoparasite, endoparasite, host, intermediate host, pathogen, vector, etc. Generally, clinical feature in parasitology or symptoms produced by parasite: एनीमिया, खून की कमी, ईचिंग, बर्निंग यूरिनेशन एंड एसिड फॉर्मेशन, एमीबिएसिस, जियाड्रिएसिस एंड और अदर क्लिनिकल फीचर्स produced by these parasites we see in next slide. पैरासाइट हमारे शरीर में किस पार्ट में कौन से पैरासाइट रहते हैं? ऑल पैरासाइट्स नॉट लिव और प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स. सर्टेन पैरासाइट लिव्स इन certain parts or organ. In brain, Plasmodium falciparum,
T. cruzi, T. bristle, Naegleria, Acanthamoeba, Toxoplasma gondyle. In oral cavity, Trichomonas tenax, Entamoeba gingivalis. In heart, T. cruzi. In lungs, pneumocytes, Entamoeba histolytica. In intestine, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Blantidium coli, Trichomonas, Cryptomonas, Cryptosporidium, Spora belli, Isospora hominis, Ditentamoeba fragilis, Enteromonas species. These parasites lives in brain, oral cavity, heart, lungs, intestine. Liver. Inside liver, Entamoeba, Plasmodium, Leishmania. In spleen, Leishmania donovani, Plasmodium species, Entamoeba histolytica. Urogenital tract, Trichomonas vaginalis. In RE system, Toxoplasma, Leishmania donovani. In bone, Leishmania donovani. In blood, Trypanosoma species, Plasmodium species, Leishmania species, Babapsia. In skin, Leishmania donovani, Leishmania tropics, and in lymph node, T. brucell. So these are the parasites which lives in the different parts or organ of human body. In this slide, we see disease and causative organism. Filariasis, Boucheria bankrupti, Enterobiasis, Enterobius vermicularis, Escherichia, Escherichia lumbricoides, Strongyloidosis, Angula stercolis and Angula intestinalis, Trichinellosis, Trichinella spiralis, Trichuriasis, Trichuris, Trichura, Cryptosporidiasis, Cryptosporidium parabum, Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, Isoproprius, Isospora belli, Malaria, Plasmodium vivax, hookworm disease or encyclostomiasis, Encyclostoma duodenale, Drunculosis, Drunculus medicinaceus, Onchocerciasis, Onchocerca valvus. So these diseases like loesis, diphyllobothriasis, tiniasis, echinococcosis, hymenolepsis, sorgonesis, etc. produced by different parasites. How I identify these different parasites? For this, with the help of lab investigation, number 1, a skin scraping test, a stool routine and culture, urine routine and culture. These tests helps us for identification of this worm in the form of ova, larva, cyst, or with the clinical feature we correlate the presence of the different parasites. For treatment purpose, in homeopathy, medicines are Arnica montana, Sina,
Chenopodium oil, Phylixmus, Teucrium, pulsatilla, Thuja, Centonine, sulfur, Eupatorium purpureum, and other constitutional medicine helps in treatment of the effect of the parasites. Maintain external and internal hygiene. In many cases where habit of garment change और क्लोथ चेंज लाइक एक भाई का कपड़ा दूसरा पहनता है या दूसरे का तीसरा पहनता है या क्लोथ शेयरिंग हैबिट जो है ये पैरासाइट इन्फेक्शन को और कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसको भी ये ट्रांसमिट करता है। खाने में अनकुक्ड मीट अगर खाते हैं तो उसमें पैरासाइट जो है जानवरों में वो मनुष्य में आ सकता है। अनकुक्ड फूड और अनहाइजीनिक कंडीशन means improper cleaning process is the richest source of the transmission of the parasite. Also, use of the net, mosquito net, and use mosquito coils and maintain proper sanitation. In this way, with the help of homeopathic medicine, we prevent maximum complications of the parasite. In next video, I discuss about life cycle of some parasites. Thank you for watching. Like, share and subscribe and give me comment. Thank you.